Hi kids. So in this video I'll be discussing the most important, the basic chapter of cell pathology, which is your cell injury, cell death, cellular adaptations, right? In this I'll be introducing you to what is pathology, what is types of injury, how is injury occurring, cell death, which can be because of necrosis, apoptosis, and what is autophagy. The other important topics of this chapter I'll be making a part 2 video for that. Now what is pathology? Patho means disease, logi is study. Whenever there is a disease, it is causing some changes in your cells, tissues, or organs. These changes can be at the least level of structure or in function, or some at the level of biochemistry. The study of these changes is basically pathology. Now we do investigations to see these changes, like these can be morphological investigation, microbiological, immunological, and molecular investigations, which will explain why signs or symptoms are happening in patients, and it can direct therapy treatment as well. Pathology is the bridge between the basic sciences that you've already read in your first year and the clinical sciences that you'll be reading further years. Now, it is also the scientific foundation for all of medicine because it tells us the basic cause of every disease and the pathogenesis behind it. We divide pathology into general pathology and systemic pathology. As the name indicates, general pathology means changes which are not tissue specific. For example, acute inflammation. No matter where it occurs, it produces the same similar picture, right? And systemic pathology is discussing specific particular organ systems and the diseases which are occurring in them and the underlying specific mechanisms for them. There are four aspects to every disease process: etiology, pathogenesis, morphology, and the clinical manifestation. Anytime you get a short note on a disease, you have to first write the epidemiology, which is not related to pathology directly, but it has its relevance. So, epidemiology is basically the age group, the gender predilection, or geographical distribution in which the disease is occurring. Now, etiology is the why of the disease. Sometimes it is idiopathic, we don't know the cause, right? Or sometimes, for example, in sickle cell anemia, the etiology is specific point mutation at the beta 6 chain of hemoglobin, right? Where the amino acid is changed from valine to glutamine. We know glutamate, we know the specific cause, etiology. Pathogenesis is that because of that mutation, some biochemical and molecular alterations are happening, that is the pathogenesis, and this can be seen under microscope as because now these were biochemical and at a molecular level. Now these are at the cells level, right, at cellular level. So now these are called morphological changes, right, whenever there is a word morphology, that relates to the structure of something. Okay, now these can be seen under the microscope, and then now finally the patient will present with certain symptoms because of as a result of these alterations, that is your clinical manifestations or your signs and symptoms. So this flow chart is discussing the progression of injury. So normal cell has a homeostasis. So whenever there is stress, it can adapt. We'll read about adaptations as well: hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, and atrophy. So it adapts. But if the cell is unable to adapt, it will land itself in cell injury, right? It can directly, and any injurious stimulus directly can cause cell injury as well. Now, if it is mild and transient, it will be reversible only, and the cell will eventually return into normal. But if the injury is severe and progressive, it will result in irreversible injury, and now there will be cell death. Now, cell death can be apoptosis or necrosis. Apoptosis can be physiological and pathological, and necrosis is always pathological. We'll read the differences between the two in the further slides. Now, coming on to what is causing cell injury, the most important is oxygen deprivation. We know that we need oxygen not just to breathe, but even our oxidative respiration will be suffering if this is not occurring. So, hypoxia is basically the deficiency of oxygen. Hypo is decreased or deficiency. Oxia is oxygen. So, it causes cell injury by reducing the aerobic oxidative respiration. Hypoxia is a very important and common cause of cell injury, cell death. And now, how is hypoxia occurring? Because we know that organ systems are given oxygen via blood. Heme is giving oxygen to all the organ systems via blood, right? So whenever the blood is not reaching, so oxygen is not reaching. So ischemia, whenever there is ischemia, inadequate oxygenation of the blood because of cardiorespiratory failure, that is, the lungs are receiving your oxygen because of you through your breathing, but that oxygen is not reaching your heart,
right? So oxygenation of the blood, the full pumping mechanism has not happened. Decreased oxygen carrying capacity of the blood. So blood's capacity has decreased, is as an anemia or carbon monoxide poisoning, or there might be severe blood loss. Now, in response to injury like this, the cell can either adapt, or it can undergo injury, or it can die. Now, apart from hypoxia, other things which are important and can cause cell injuries, physical agents as well as chemical agents. Physical agents like just normal mechanical trauma, like accidents, roadside accidents, extremes of temperatures like burns or deep cold like frostbite, sudden changes in atmospheric pressure called as barotrauma, radiations, and electric shock. Chemical agents and drugs, glucose or salt in hypertonic concentrations are dangerous. Oxygen, even at higher concentration, is toxic. And then poisonous amounts of metals like arsenic, cyanide, or mercury, environmental pollutants, insecticide, herbicides, industrial and occupational hazards such as carbon monoxide and asbestos, recreational drugs such as alcohol. The list is endless. And then therapeutic drugs, many of which have toxic side effects. So we have read about the cost benefit analysis, and hence in pharmacology you must have read about the side effects of every drug that we use. It's based, so we use them even though we have side effects because of the cost and benefit analysis. Now, apart from these, we have infectious agents. That is, you must have read about these in microbiology, like viruses, tapeworms, rickettsia, bacteria, fungi, parasites, etc. Immunological reactions like autoimmune diseases or immune reactions to external agents such as viruses and environmental substance. Genetic abnormalities like Down syndrome or sickle cell anemia. Genetic defects can cause injury because of protein deficiency, protein function defect, like in inborn errors of metabolism, your enzyme defects, or sometimes misfolded proteins or damaged DNA can accumulate, which can trigger cell death. We'll read about these. And there's something called as polymorphism. That means all of us do not have the same level of susceptibility to certain chemicals and environmental insults. Now, injury can be reversible or irreversible. Now, reversible injury has two key parts: cellular swelling, which is also called a hydropic change or fatty change. Now, hydropic change or cellular swelling basically means there is accumulation of water in simple terms in the cell. Okay, the cell has swollen up. So basically, the cell's homeostasis is not, excuse me, fluid homeostasis is not maintained anymore, which is because of failure of your pumps, sodium potassium ATPase pump. And there are many energy dependent ATPase pumps, right, in your membrane. And then fatty changes basically in hypoxic injury or in toxic or metabolic injury. There is in the cells which are involved in metabolism, there is lipid deposition, lipid changes, lipid degeneration is occurring. So in that, lipid vacuoles are forming in the cytoplasm. Another important point is nutritional imbalance. It can be deficiency of food or excess of food. Both of them are major causes of cell injury. So you must have read about protein calorie malnutrition, and Kavashkor and marasmus. Other types of it is very common among chiefly common among lower income populations, but it is also fairly common in developing nations such as India as well. And then vitamin deficiencies are fairly common throughout the world. Anorexia nervosa, which is a psychological disorder in which patient is not consuming food any longer. And then there's food shortage or poor diet. For whatever reason, there is deficiency of protein calories because of the inadequate intake. And then there can be nutritional excess as well. We know that obesity is associated with diabetes, cancer, PCOS, so many. And we know that lipidaceous diets, they cause cholesterol accumulation in your blood vessels, and it eventually leading to atherosclerosis, which is the primary risk factor for cardiovascular disease. Now, how does a cell look like when cell injury is occurring? Cell swelling is the main feature, which is seen in all forms of injury, right? Now, when in pathology, when you're describing any type of disease or injury or tissue, you have to describe it on two levels: grossly as well as microscopically. Grossly means that on naked eye, if you were to remove the organ, what would you see? And microscopically, if you take a section and put it under and put a stain on it and see it under the microscope, right? So on gross, it causes pallor, increased turgor, and weight of the cell organ. And on microscopically, you will see small, clear vacuoles within the cytoplasm, which are basically the pinched off segments of the ER. So this is also called as hydropic change, like I said, or vacuolar degeneration. The swelling of cells is reversible.
Now, what are ultrastructural changes that happen? Plasma membrane alterations. They can be blebbing or loss of microvilli, mitochondrial changes as well, swelling of mitochondria, amorphous densities, dilatation of the ER, polysomes are detached, myelin figures, nuclear alterations as well. Now coming to an important topic, which is cell death. There are two types of cell death: necrosis and apoptosis. They have different mechanisms, different morphology, and different role in physiology and disease, which we'll discuss. If in this picture, if you look, both of them are having membrane blebs, but myelin figures are only on the left side is necrosis and the right side is apoptosis. On progressive injury, apoptotic bodies are formed and the cell is phagocytosed eventually in apoptosis. But here, because of the breakdown of the plasma membrane organelles and nucleus, because of leakage of the contents of the cell outside, there is inflammation surrounding the cell, local inflammation. Now, these are differences in necrosis and apoptosis. The main key points you have to remember is cell size, plasma membrane, cellular content, adjacent inflammation, and nucleus. So, what is happening to the cell size? It is enlarging, and the cell is swelling in necrosis, but it is shrinking. The cell size is reducing in apoptosis because apoptotic bodies निकल रही हैं बन बन के ना सेल से, तो सेल छोटा हो रहा है, हर बार apoptotic bodies निकल रही हैं उसमें से, बट नेक्रोसिस में सेल enlarge हो रहा है. न्यूक्लियस में जो चेंजेस है नेक्रोसिस में वो पिक्नोसिस, केरियोरेक्सिस, केरियोलाइसिस टाइप की हो रही हैं, बट एपोटोसिस में वो न्यूक्लियोसोम साइज की फ्रेगमेंटेशन हो रही है. नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज्ड है, इसीलिए तो सारे सेल के कंटेंट्स बाहर लीक हो रहे हैं, ठीक है, जो आसपास फिर इन्फ्लेमेशन हो रही है. एपोटोसिस में सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्टर्बेड, whereas in apoptosis it is intact. Cellular contacts, because of enzymatic digestion, they will leak out and they will cause adjacent inflammation in the local tissue. In apoptosis, the cellular contents are intact. Maybe apoptotic bodies में थोड़ा cytoplasm के content, organelles और nucleus शायद निकल जाए, but the cellular contents more or less are intact. But and hence there will be no inflammation because phagocytosis होगा उसका cell का. Necrosis is always pathological. Apoptosis can be physiological and pathological. Now we are coming to a very important topic, that is necrosis. Types of necrosis can be a theory question as well as a practical question. What is necrosis? It's a pathological process because of severe injury. It's a result of consequence of severe injury. Now again, the causes are same as of any cell injury, which is ischemia, microbial toxin, that is your infections, burns, physical trauma, chemical or physical injury, right? Now what is happening in necrosis? This denaturation of intracellular proteins and enzymatic digestion of the lethally injured cell, leakage of contents of the cell through the damaged membranes, as we saw earlier, and that leakage will cause local inflammation. This leakage of intercellular proteins through the damaged plasma membrane, and they enter the circulation. These leaked proteins, and they become the basis for the blood test that we do. How does it look under the microscope? So there is increased eosinophilia. So I hope you know hematoxylin and eosin HND stain, which we use in pathology in histology lab. So hematoxylin is blue colored, eosin is red colored. Hematoxylin stains RNA, which is and it stains them. It stains RNA or DNA. It stains them blue. RNA, the cytoplasmic RNA and the nuclear DNA, it stains them blue. Whereas eosin, it stains denatured cytoplasm. It's eosin normally stains your cytoplasm pink or red. Okay, eosin is itself red and hematoxylin is blue. Whenever the word is eosinophilia, it means there's more redness or more pinkishness, and that is happening in apoptosis because of loss of the cytoplasmic RNA, because this would have given some bluishness. So the loss of that and the denatured proteins having a lot of red color. Okay, there's more glassy homogeneous appearance than normal cells because of loss of glycogen, and myelin figures are derived. See, myelin figures are not present in apoptosis. There we have apoptotic bodies. Now, ultrastructural changes on electron microscopy, you see discontinuity in the plasma and organelle membrane. Now, apoptotic membrane, cell membrane is always intact. There is marked dilation of mitochondria, large amorphous densities, myelin figures, and nuclear changes, karyolysis, pycnosis, and karyorexis. Karyolysis is because of loss of DNA. The basophilia has faded. So eosinophilia was redness, basophilia is blueness. So this basophilia of the chromatin has faded because this DNA is lost. Pycnosis because of nuclear shrinkage and increased basophilia. It is seen in an apoptotic cell as well. Karyorexis, the pycnotic nucleus now finally undergoes fragmentation. So there's karyolysis, pycnosis, and karyorexis. All of these occur in a necrotic cell.
Now, coming to an extremely important topic, that is the types of necrosis. First is coagulative necrosis. It is the most common one that you see. Here, the architecture of the tissues, the dead tissues, is preserved. So we are saying coagulative necrosis. So that means the tissues are died all. The tissues have died already. The cells are dead now, but the architecture is maintained yet. The firm texture may be there, and this architecture is maintained because the dead cells are blocking the proteolysis of them. Their own proteolysis is not happening yet, because of which eosinophilic anucleate cells are persisting for days to week. Eventually there will be phagocytosis of the debris. Infiltrating leukocytes will come, and the lysosomal enzyme will digest these dead cells. Now we know what is ischemia, right? Because there's loss of lack of oxygen supply to a tissue because of the obstruction to a vessel which it was supplying. So it causes ischemia. Ischemia causes, the result of that is coagulative necrosis. So the blood is not reaching the organ. What will happen because of that? The blood is not reaching the organ anymore. What is happening? The coagulative necrosis is happening. The cell is dying because of that. So ischemia causes coagulative necrosis in all the tissues except for brain. If you see this picture over here, the gross picture, you see kidney, and in that you see a yellow shaped, a yellow colored wedge shaped area, a local area. This is a infarct. Okay, the infarct is, this is because of ischemia. This is a localized area of coagulative necrosis. In the right picture, you see the cells are maintained, the outline of the cell is maintained, but there is no nuclei that you can appreciate. The blue is not because of the nuclei here, it's because of the inflammation, this inflammatory infiltrate. Okay, as the name indicates, liquefactive necrosis results in such a death of the tissue that it becomes a liquid viscous mass. In death of this hypoxic, whenever there is hypoxia within the CNS, it doesn't result in coagulative necrosis like we discussed earlier. It results in liquefactive necrosis. So that's the reason for that are unknown. In all the other organs of the body, whenever there is ischemia, there will be coagulative necrosis. But in CNS, whenever there is ischemia or hypoxia, there will be liquefactive necrosis and not coagulative. Other causes for that can be, of course, infections, focal, bacterial, or fungal infections. Here, the at the site of the necrosis, there are microbe, the infection causing organism, and the WBCs are coming, and the liberation of enzymes from the damaged cells. So they are forming pus. Okay, this is resulting in the formation of pus, the creamy yellow necrotic material. Now it's creamy yellow because of the presence of a lot of leukocytes. Next is your gangrenous necrosis. It's not a pathological term. This is used in clinical practice, especially in a diabetic patient. Lower limb will be amputated because of sometimes necrosis, and that is gangrene. This is because that tissue has lost its blood supply, undergone necrosis. This is a coagulative type of necrosis. Superimposed over the coagulative necrosis, we have bacterial infection, which has now become now liquefactive necrosis. So it becomes wet gangrene. So there was coagulative necrosis initially, then they superimposed in bacterial infection, especially in a diabetic patient, and then it was more liquefactive necrosis occurs because of the action of the degradative enzymes and the WBCs that are coming, and because of that there is pus formation and it's a wet gangrene. Another type of caseous necrosis for which your classic example is tuberculosis. So in tuberculosis, we see caseous necrosis. Caseous is derived from cheese-like, which means white. So it's a white, friable if appearance of the area of necrosis. If you see within the this lung, if you see within the section of the lung, there is a walled off, almost a circular area, right? This is a walled off area because what is happening is it's a granuloma formation occurs in TB. There are many diseases in which granuloma formation occurs, but there is not necrosis in all of them. So here is granuloma formation along with necrosis. So there is fragmented or lysed cells and the granular debris vagara present, and there is a distinct inflammatory border which separates it from the normal tissue. Now, coming to fat necrosis, it refers to focal area of fat destruction. So, this is classically seen in a surgical emergency, acute pancreatitis. You'll read about this in surgery in future as well. So, it's an emergency. Okay, patient has to be operated. So, this is because there is release of pancreatic lipases into the pancreas and the peritoneal cavity. Now, these lipases, what are they doing? They are digesting the fat of the peritoneum. Now, fat जो फैट है उसमें से ट्राइग्लिसराइड फैट इज मेड ऑफ ट्राइग्लिसराइड एस्ट्रस, सो दैट विल रिलीज फैटी एसिड्स.
by the action of pancreatic lipases. Now, these fatty acids will combine with calcium to produce grossly visible chalky white areas. It's called fat saponification. And there can be shadowy outlines of the necrotic fat cells with basophilic calcium deposits and inflammatory reactions. So, there's necrotic fat cells, the fat cells become necrotic. There is basophilic calcium deposits. So, just remember that there's necrotic fat cells, calcium deposits, and an inflammatory reaction. Then you have your fibrinoid necrosis. Fibrinoid is classically seen in vessels, blood vessels, usually seen in immune reactions involving blood vessels. So whenever there are antigen antibody complexes deposited in the walls of arteries. So deposits of these immune complex together with fibrin must have leaked out of the blood cells, which gives to a bright pink and amorphous appearance on HNE, and it's called fibrinoid or fibrin-like. Now we're coming to a very important topic, which is apoptosis. The other name for it is programmed cell death, right? It's a type of cell death that is induced by a tightly regulated suicide program. Okay, the cells which are supposed to die, they have their intrinsic digestive enzymes that will degrade their cell's own genomic DNA and cytoplasmic and nuclear proteins, and there will be apoptotic bodies. These apoptotic bodies have plasma membrane around them, and they may have cells content like cytoplasm, nucleus, or organelles. Now, why is inflammation not occurring in apoptosis but it was occurring in necrosis? In apoptosis, the cell has certain receptors or certain signals. We'll read about them. It's called death receptors or TNF receptor 1 or fast receptor, right? These death receptors, find me or eat me receptors, they're calling them find me, eat me signals on the surface of these dead cells. Phagocytes come attracted to these receptors and phagocytose these cells. So before any inflammation occurs, this phagocytosis devours these cells that are supposed to be dead, and this occurs within seconds, minutes to seconds. So there is no inflammation. Okay, and again, whenever you use the word apoptosis, that can be pathological as well as physiological. But whenever you use the word programmed cell death, that indicates that it is normal, which occurs classically in embryogenesis. Now, apoptosis can be physiological as well as pathological. The classic example is the removal of excess cells during development, during embryogenesis. We know that the primordial structures, they eventually get matured into, remodeled into adult organs. So the process which helps that is involution, and involution basically means that certain cells are dying, okay, which we know didn't need, okay. So programmed death refers to apoptosis that is occurring during development. It is normal. And then another example is involution of hormone dependent tissues on hormone withdrawal. For example, we know in menstrual cycle at the end of the luteal phase, progesterone is no longer there, so bleeding happens. And then ovarian follicular atresia and menopause because of decrease of estrogen or less estrogen, there is no follicular cells are not proliferating anymore, so they're becoming atretic. And then regression of lactating breast after weaning. Another example is cell turnover in proliferating cell population is maintained with the help of apoptosis. So, immature lymphocytes are proliferating in the bone marrow and thymus, and there are B lymphocytes which may fail to express useful certain receptors. The epithelial cells and crypts have to be maintained at a certain number. So, that is done with the help of apoptosis. And elimination of potentially harmful self-reactive lymphocytes. So, I've already made a video on the chapter of immune system. So, if you've read and perhaps watch the video, you would know that there's something called as self-reactive lymphocytes when your own T cells are reacting against your own antigens as if they are foreign, right? So that's the basis of autoimmune diseases, based by the way. So that elimination is happening with the help of apoptosis. And then let's say there was inflammation, acute inflammation के केस में neutrophils, chronic inflammation के केस में lymphocytes. So now they've done the warding off and the inflammation is in control now, the disease in control now. So these host cells that have served the useful purpose will be dying with the help of apoptosis. Now, in pathology, the classic example is DNA damage. So, ironically, even though for cancer we give radiation therapy and cytotoxic drugs, which is called chemoradiotherapy, basically, they can cause DNA damage by directly or they produce free radicals. So, if our normal DNA repair mechanisms cannot correct these damages, so the apoptosis will be triggered. So, here the apoptosis has a protective function so that the cells are not transforming into malignancy. And then accumulation of misfolded proteins. Whenever there is endoplasmic reticulum stress happening because of the misfolded proteins, those cells are also digested.
killed by apoptosis. Now, how is the cell looking under the microscope? The cells are shrinking. Remember, apoptotic bodies निकल रही हैं बन बन के, तो cells are shrinking. Necrosis में cells were swelling. Again, dense और eosinophilic cells है packed organelles. Chromatin condensation होगी classically periphery के पास, बिल्कुल membrane nucleus की membrane के नीचे. Periphery में chromatin condensation होगी. Nucleus भी टूट टूट के fragments बना सकता है. Cytoplasmic blebs बनेंगे, वो दोनों में बन सकते हैं, और apoptotic bodies जो सिर्फ apoptosis में बनेंगी. अगेन वही कि मेम्ब्रेन ब्लेब्स बने हैं, तो फिर इवेंचुअली एपोटोटिक बॉडीज जिसके अंदर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म, थोड़े बहुत ऑर्गेनेलीज, थोड़े बहुत न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं, और फिर इनके फेगोसाइटोसिस वाले जो सेल्स आएंगे क्लासिकली जो मैक्रोफेजेस आते हैं वो, और इंटेंसली यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म. Now we are coming to a very very important topic, which is mechanism of apoptosis. There are two distinct pathway of apoptosis, which is mitochondrial, the intrinsic pathway, और the death receptor pathway, the extrinsic pathway जो मैंने बोला था ना, eat me kill me signals वाले जो है, तो mitochondrial pathway and death receptor pathway. Both of these pathway require the activation of enzymes such as something called as caspases. Remember caspases. द प्रोसेस ऑफ एपोटोसिस में दो फेजेस हैं. इनिशिएशन फेज, जिसमें कैस्पेसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, अभी एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, बेसिकली सीक्वेंशियल कैस्केड शुरू हो जाता है, और एक एक दो बार कैस्पेसेस एक्टिवेट हो गए, फिर और कैस्पेसेस को एक्टिवेट करते रहते हैं. तो इनिशिएशन फेज में कैस्पेसेस बिकम कैटालिटिकली एक्टिव. फॉर एग्जीक्यूशन फेज में जो एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस हैं वो ट्रिगर करते हैं फाइनली कि सेल के कंपोनेंट्स को डिग्रेड किया जाए. तो देयर टू डिस्टिंक्ट पाथवे विच कैन, सो दोनों पाथवेज के लिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए इवेंचुअली कैस्पेसिस चाहिए. नाउ इस इमेज में ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हो गया. लेफ्ट में देखो माइटोकॉन्ड्रिया इंट्रिंसिक पाथवे. तो सेल इंजरी इंट्रिंसिक क्यों हुई है? क्योंकि कोई सर्वाइवल फैक्टर्स या ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉल हो गया, या कोई मे बी डीएनए डैमेज हुआ है, या फिर ईएस टेस्ट हुआ है प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज BCL2 फैमिली. तो BCL2 फैमिली में तीन तरह की जीन्स होती हैं: प्रो एपोटोटिक, एंटी एपोटोटिक और सेंसर्स. तो सेंस जो प्रो एपोटोटिक है, बैक्स और बैक मतलब वो एपोटोसिस कराएंगी. BCL2 BCLX है, XL और MCL1 है एंटी एपोटोटिक, मतलब वो रोकेंगे एपोटोसिस. और BCL2 बिम बैड वगैरह ये है, ये सेंस करती हैं कि सेल को एपोटोसिस की तरफ जाना चाहिए या सेल को रोकना चाहिए एपोटोसिस, तो उधर वो वाली जीन्स को एक्टिवेट करेंगी. तो लेट्स से कोई सेल इंजरी वाले ये तीनों हुई, ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल या डीएनए डैमेज या ईएस स्ट्रेस, तो BCL2 के फैमिली ने सेंस किया कि अब इस सेल को मारना चाहिए, एपोटोसिस होना चाहिए. तो BCL2 फैमिली फिर इफेक्टर्स बैक्स और बैक आएंगे. अब बैक्स और बैक आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाके लग जाएंगे. तो ये क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं. तो उससे जो निकलता है वो है साइटोक्रोम सी एंड अदर प्रोएपोटोटिक प्रोटीन्स भी, बट क्लासिकली जो है वो है साइटोक्रोम सी. साइटोक्रोम ऐसा सी क्या ऐसा करता है कि जिसकी वजह से कैस्पेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं. हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कौन से वाला कैस्पेसेस और साइटोक्रोम सी क्या करता है. ठीक है. फिर उधर अगर डेथ रिसेप्टर पाथवे देखो, एक्सट्रिंसिक पाथवे, वहाँ पे जो डेथ रिसेप्टर पाथवे सेल के ऊपर लगे थे, जो सेल को मारना है प्रोटिक सेल के ऊपर, फास और TNF रिसेप्टर लगा, उसके ऊपर आके आपके लिम्फोसाइट लगे, और अडेप्टिव प्रोटीन्स ने उनके इनिशिएटर कैस्पेसिस को एक्टिवेट किया. और इवेंचुअली अब इनिशिएटर कैस्पेसिस पे बोथ द पाथवेज हैव कन्वर्ज्ड. नाउ एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस आर एक्टिवेट, मतलब दीज आर द कैस्पेसिस व्हिच आर इवेंचुअली गोइंग टू किल योर सेल. नाउ कैसे किल करेंगे? न्यूक्लियस में हमारे ऑलरेडी हमारा डीएनएस है, जो वो अपने डीएनएस को नहीं मारता, तो वो एक इनहिबिटर होता है जो सॉरी अपने डीएनए को नहीं मारता, तो उसके लिए एक इनहिबिटर होता है, तो उस इनहिबिटर को तोड़ना इस एक कैस्पेसिस का काम है. तो उसकी वजह से एंडोन्यूक्लियस खुद का एक्टिवेट अपने ही न्यूक्लियस को मारता है. साइटोस्केलेटन वाले जो मारने वाले हैं वो ब्रेक डाउन होता है, और फिर साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बन के एपोटोटिक बॉडीज बन के फेगोसाइटोसिस हो रहा है सेल का, और इन्फ्लेमेशन नहीं होगी. नाउ इंट्रिंसिक और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ऑफ एपोटोसिस, वही जो हमने अभी मतलब डिस्कस किया वही है इसमें लिखा हुआ. इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज परमेबिलिटी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, और वहाँ से फिर हमारे प्रो एपोटोटिक मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, और जो क्लासिकली जो निकल रहा है साइटोक्रोम सी. जब साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आ गया, दैट मीन्स दैट इज इनिशिएटिंग योर सुसाइड प्रोग्राम. फिर प्रो एपोटोटिक प्रोटीन्स BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स वाले निकलते हैं. BCL2 क्लासिकली ओवर एक्सप्रेस होता है कुछ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस ऑफ B सेल लिम्फोमास में, वो फर्दर यू रीड इन सिस्टमिक. तो BCL2 फैमिली में तीन चीज़ें होती हैं: एंटी एपोटोटिक प्रोटीन्स या जीन्स BCL2, BCLXL, MCL1. तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी है, साइटोसोल में भी है, ER में भी है. ये प्रिवेंट करती हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहे, इम्पर्मिएबल रहे, और साइटोक्रोम सी और डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ना आए. प्रो एपोटोटिक बैक्स और बैक है, वो भी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन में रहते हैं,
के अंदर ओलिगोमेराइज होते हैं, दे प्रमोट कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ी रहे। सेंसस बैड, बिम, बिड, पूमा एंड नॉक्सा बेसिकली सेंस करते हैं कि सेल को बैलेंस बना के रखते हैं दोनों में, कि सेल को किधर की तरफ जाना चाहिए। नाउ वही हमने पढ़ा था, जो जब ग्रोथ फैक्टर और सर्वाइवल सिग्नल्स मिल रहे हैं सेल को, तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स प्रिवेंट करेंगे लीकेज ऑफ डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन्स। बट व्हेन द सेल इज डिप्राइव्ड ऑफ दिस सिग्नल्स, या फिर डीएनए डैमेज, या फिर ईयर स्ट्रेस है, तो बैक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जाके लगेंगी और वो साइटोक्रोम सी को निकालेंगी। अब साइटोक्रोम सी ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से सुसाइड प्रोग्राम एक्टिवेट होता है? साइटोक्रोम सी बाइंड्स टू प्रोटीन कॉल्ड एपैफ1, एपोटोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैस्पेस 9 पे जाके लगता है, और फिर एंजाइम है, ये कैस्पेस खुद ही क्लीव करता है और कैस्पेसेस को। तो इट दिस एंजाइम क्लीव्स मोर कैस्पेस 9। तो दिस क्लीवेज विल एक्टिवेट कैस्केड ऑफ कैस्पेस एक्टिवेशन। ठीक है, और फिर इवेंचुअली दे विल एक्टिव तो अब जो एक्टिवेट हो गए हैं कैस्पेसेस, प्रो कैस्पेसेस से कैस्पेसेस बन गए हैं, नाउ दे विल एक्टिवेट द एग्जीक्यूशनल फेज ऑफ एपोटोसिस। This is again just pictorial representation of your intrinsic pathway. वायबल सेल में, नॉर्मल सेल में सर्वाइवल सिग्नल ग्रोथ फैक्टर्स जैसे आ रहे थे, तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हमारी लाइक BCL2 वगैरह आ रही हैं, और वो जाके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे लग रही है, साइटोक्रोम सी नहीं लीक हो रहा। बट जब एपोप्टोसिस होना है तो वायबल सिग्नल्स नहीं है, या फिर कोई डीएनए डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से सेंसर्स आए हैं। सेंसर्स ने जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं वो नहीं आई, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स आई हैं, वो जाके लग गई हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन पे, जो कि परमेबल बन गई है, जिससे और बैक का जिसने सॉरी लीकेज करवाया है साइटोक्रोम सी का और अदर डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन का, जिसकी वजह से कैस्पेसेस एक्टिवेट हुए और फिर एपोप्टोसिस हुआ। नाउ दिस इज एक्सट्रिंसिक पाथवे और डेथ रिसेप्टर पाथवे। इसमें क्या है, फाज लाइगेंड है जो आपके ऐसे लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स पे लगा है जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, जैसे साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स हो गए, या फिर रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि सेल्फ रिएक्टिव जो एंटीजन्स जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को मारने वाले सेल हैं। तो मरने वाले सेल के ऊपर कुछ सिग्नल्स हैं, ईटविन सिग्नल्स जैसे बोलते हैं। फास्ट रिसेप्टर है एक, और एक TNF रिसेप्टर 1 भी होता है। तो ये जो जब ये फास्ट लाइगैंड फास्ट से आके लगा, तो FADD फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन बन गया काफी प्रोटीन्स का मिलके। दे विल बाइंड टू प्रो कैस्पेसिस 8। नाउ प्रो है दैट मींस वो इनएक्टिव है, तो फिर वो एक्टिव खुद की ही ऑटो कैटालिटिक एक्टिवेटिंग होगी उनकी एक्टिव कैस्पेसिस 8। तो ये जो कैस्पेसिस एंजाइम है खुद को ही एक्टिवेट करते रहते हैं। तो इवेंचुअली वो जो एग्जीक्यूशनल कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेंगे, एंड फिर हमारा हेपेटोसिस होगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा सेल का। The same very thing in written. When fast ligands bind to fast, three or more molecules of fast are brought together, and their cytoplasmic जो domains है, they form a death domain, जिसको बोलते हैं fast associated death domain. This will bind to an inactive form of caspase-8. तो फिर काफी सारे प्रो कैस्पेसेस इकट्ठे होंगे, फिर वो ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिव कैस्पेसेस 8 बनेंगे, एंड इवेंचुअली दे विल culminate in the activation of काफी सारे executioner caspase. Normally, this pathway is inhibited by a protein called FLIP. This binds to procaspasis 8 से bind करके ये वाला pathway को inhibit करवाती है ये FLIP. तो ये नॉर्मली भी प्रोड्यूस होती है फ्लिप, और वायरसेस भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को एपोप्टोसिस से बताने के लिए। अब एग्जीक्यूशनल फेज में क्या हो रहा है, दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे ने बेसिकली एग्जीक्यूशनल फेज वाले कैस्पेसिस को एक्टिवेट कर दिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ने इनिशिएटर कैस्पेस 9 को एक्टिवेट किया था, और डेथ रिसेप्टर पाथवे ने इनिशिएटर कैस्पेस 8 और 10 को एक्टिवेट किया। तो अब जो रैपिड और सीक्वेंशियल एक्टिवेशन होगी एग्जीक्यूशनल कैस्पेसिस की, जो है कैस्पेस 3 और कैस्पेस 6, अब वो डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स पे दे विल बी एक्टिंग टू किल देम। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्मिक डीएनए को क्लीव करेंगे और वो एक्टिव हो जाएगा और सेल के अपने ही डीएनए को मार देगा, मतलब क्लीव कर देगा, तोड़ देगा। बाकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस को भी और फिर फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे। रिमूवल ऑफ द डेड सेल्स, apoptotic cells and their fragments undergo several changes in their membranes that actively promote their phagocytosis. Apart from your receptors and intrinsic induced induction of your apoptosis, कुछ और भी चीज़ें हैं जो सेल के सरफेस पे होती हैं जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस वाले सेल आते हैं एपोप्टोटिक सेल की तरफ। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जो फॉस्फेटाइडल सीरीन है वो अंदर की तरफ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बट एपोप्टोटिक सेल में वो बाहर की तरफ फ्लिप आउट होता है। तो मैक्रोफेजेस आते हैं, वो डिटेक्शन पॉइंट है कि डिटेक्ट करते हैं कि इस सेल को फेगोसाइटोसिस करवाना है। फिर और कुछ एपोप्टोटिक बॉडीज के ऊपर थ्रोम्बोस्पोडिन
एक्टिवेट होता है, मतलब कोट होता है, वो भी इनवाइट करता है फेगोसाइट्स को। एपिटोटिक बॉडीज के ऊपर नेचुरल एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट वगैरह, स्पेशली C1q आके लग सकता है, जो फेगोसाइटोसिस का फिर से फेगोसाइटोसिस होगा। एंड दिस फेगोसाइटोसिस इज सो एफिशिएंट एंड विद इन मिनट्स जो है वो सेल्स डिसअपेयर हो जाते हैं, कोई ट्रेस नहीं होता और कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, इवन दो कि एक्सटेंसिव एपिटोसिस हुआ हो। क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कोरिलेशन एपिटोसिस की हेल्थ एंड डिजीज में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही है, वही एग्जांपल्स ऑफ एपिटोसिस। ग्रोथ फैक्टर की डेप्रिवेशन, जैसे हार्मोन सेंसिटिव सेल्स को अगर रेलेवेंट हार्मोन से डिप्राइव कर दिया जाए, लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट ना करें, उनके एंटीजेंस और साइटोकाइंस, न्यूरॉन्स को डिप्राइव कर दिया जाए, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स को, दे ऑल विल डाई बाय एपिटोसिस। और इन सब में वही एंटी एपिटोटिक डिक्रीज हो जाएगा और एक्टिवेशन होगा प्रो एपिटोटिक का। डीएनए डैमेज हुआ है रेडिएशन या कीमोथेरेपी की वजह से, तो इनिशिएट हुआ डीएनए डैमेज और वो TP53 को इन्वॉल्व करता है। TP53 का यू विल रीड अबाउट इट इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ न्यूप्लेसिया, बट अगर ब्रीफ में करना हो तो विल डिस्कस नाउ। Now, if the cell has some DNA damage, your P53 will accumulate within the cells and it will cause the cell cycle arrest at G1 phase. कि now cell को थोड़ा time दो repair करने के लिए. If the cell gets repair, all is well and good. But if the cell's DNA damage is not repaired, it's too great. So P53 will now induce apoptosis. When P53 itself ही म्यूटेट हुई है, खुद ही एपोटोसिस हुआ है, तो जो डैमेज्ड वाले सेल्स हैं उनका P53 इंड्यूस्ड एपोटोसिस नहीं हो पाएगा एंड दे विल सर्वाइव। और इन सेल्स में और इस डीएनए डैमेज की वजह से और म्यूटेशंस आएंगी, तो वो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो P53 नॉर्मली डीएनए डैमेज को रोकती है। ये तो देखती है कि डीएनए डैमेज अगर रिपेयर हो गया तो ठीक, अगर नहीं रिपेयर हुआ तो ट्रिगर करती है एपोटोसिस। पर अगर P53 खुद ही म्यूटेट हो गई या खुद ही एब्सेंट हो गई, तो जो डीएनए डैमेज वाला सेल है वो सर्वाइव करेगा, उसका एपोप्टोसिस नहीं होगा और उसके ऊपर और म्यूटेशंस अगर आती रहेंगी क्योंकि डीएनए डैमेज तो ऑलरेडी हुआ रखा है, तो उसके ऊपर नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है ऐसे सेल। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ER स्ट्रेस। तो नॉर्मली जो अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं वो, या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, वहाँ पे शेपरॉन्स क्या करते हैं, प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अबनॉर्मल प्रोटीन को हटा दें। बट इफ दिस इज नॉट हैपनिंग, if the cytoprotective response is unable to cope, मतलब misfolded proteins पड़ी हुई हैं, कोई रिपेयर नहीं कर पा रहा उनको, तो cells activate caspases and they induce apoptosis. So this is called ER stress. Apoptosis is induced by TNF receptor family. We've already discussed this. जो T cells है उसके ऊपर F fast ligand है, which will bind to fast on the same or neighboring lymphocytes. This is for to eliminate lymphocytes जो हमारे सेल्फ एंटीजेंस को एज फॉरन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। नॉर्मली कुछ सेल्स हैं जो कि सेल्फ एंटीजेंस को फॉरन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उनको मारने के लिए TNF रिसेप्टर फैमिली एपोटोसिस करवा रही है फास्ट लाइगेंड के द्वारा। बट अगर फास्ट में या फास्ट लाइगेंड में म्यूटेशन हो गई, तो सेल्फ रिएक्टिव एंटीजेंस को कोई मारने वाला नहीं है, कोई दूसरे लिम्फोसाइट्स आके इनको खत्म नहीं कर रहे, तो दैट विल कॉज ऑटोइम्यून डिजीजेस। दैट इज वन थियरी फॉर द कॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस. Now we are coming to a very simple topic called autophagy. Auto means self-phagy is eating, a process in which cell will eat its own contents. So basically सेल के खुद के ही साइटोप्लाज्म के जो मटेरियल हैं वो अपने ही लाइसोसोम को दे देगा डिग्रेडेशन के लिए। शैपरॉन मीडिएटेड भी हो सकती है, माइक्रो ऑटोफेगी भी हो सकती है कि इन्वेजिनेशन हो गई है लाइसोसोम के अंदर, बट मेन जो है मैक्रोफेज ऑटोफेजी होती है, जो विल बी डिस्कसिंग द सिक्वेस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ सेल्स इन अ ऑटोफेगोसोम, व्हिच इज एक वैक्यूल बन जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, नॉर्मल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स बन रहे हैं विच आर फ्यूजिंग विद द लाइसोसोम। तो वो ऑटोफेगोसोम और लाइसोसोम फ्यूज करवा के ऑटोफेगोलाइसोसोम बनाते हैं एंड देन इस सेल इज डिग्रेडेड। ये ब्रीफ में ऑटोफेगी के स्टेप्स को डिस्कस किया है। ऑटोफेगी का इम्प्लीकेशन फिजियोलॉजिकल स्टेप्स में भी है, जैसे एजिंग में, एक्सरसाइजिंग में, एंड इट इज इंड्यूस्ड व्हेन यू आर फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रिंसिपल ऑटोफेजी ही है, एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी इसका रोल है, विल डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप्स यही है कि भाई जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, दे विल बिकम फॉर्म एन आइसोलेशन मेम्ब्रेन अराउंड, दे विल इलोंगेट, फिर वो मेच्योर करेंगे ऑटोफेगोसोम, दे फ्यूज विद द लाइसोसोम और इवेंचुअली डिग्रेड हो जाएंगे कंटेंट्स, क्योंकि लाइसोसोम का क्या फंक्शन, लाइसोसोम के अंदर तो डिग्रेडेशन एंजाइम पड़े हैं ना। तो जो दो चीज़ें हैं, एक तो ATG जीन्स, ऑटोफेजी रिलेटेड जीन्स को बोला गया कि दे आर फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोफेगोसोम, एंड
there's something called as conjugation systems होते हैं LC3 जो conjugation system है वो करवा रहे हैं elongation and closure of the autophagosomal membrane. Now, the role of autophagy in pathological scenarios, for example, cancer may protect against cancer as well as it can promote cancer growth. In neurodegenerative disorders, Alzheimer's और Huntington's में हमें पता है कि जो proteins accumulate हो रही हैं उनको उन cells को मारने के लिए infectious disease में many pathogens are degraded by autophagy like mycobacteria, Shigella, HSV1 और inflammatory bowel disease में Crohn's और ulcerative colitis में भी इसका role है. So this was all, kids. I hope you will understand the topic of cell injury now better. बाकी जो main topics इसके हैं, I'll be making a second video on that as well. Thank you for watching, and let me know in the comment section if you didn't get anything or if there's something that you would like me to make a video on.